Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Exercises. Question number A. Choose the correct option. Number 1. In reflection of light, the angle of incidence is option A. Greater than the angle of reflection. B. Equal to the angle of reflection. C. Less than the angle of reflection. D. None of these. Answer is equal to the angle of reflection. Number 2. The incident ray, the normal ray and the reflected ray. Option A. Lie on the same line. B. Lying on the same plane. C. Are perpendicular to one another. D. Are parallel to one another. Answer is B. Lie on the same plane. Question number 3. In a plane, which of the following correctly describes the nature of the image form? Answer is D. Same as the object when same distance as the object. Question number 4. Which of the following is true for reflection when light travels along the normal from a rarer to a denser medium? Option A. Light bends towards the normal. B. Light bends away from the normal. C. Light travels straight undeviated. D. Light cannot enter the medium. Answer is A. Light bends towards the normal. Question number 5. Dispersion is option A. The bending of the colored light. B. The bending of the white light. C. The splitting of white light into its constituent color. D. The reflection of white light into its constituent color. Answer is C. The splitting of white light into its constituent color. Question number B. State whether the following statements are true or false. Correct the false statements. Number 1. We see objects around us because light is absorbed and re-emitted by the object. Answer is true. Number 2. In diffuse refraction, the laws of reflection do not hold true. Answer is false. In diffuse reflection, the laws of reflection holds true. Number 3. In laws of reflection, the incident ray, the reflected ray and the normal do not lie on the same plane. Answer is false. In laws of reflection, the incident ray, the reflected ray and the normal lie on the same plane. Number 4. In a plane mirror, the image formed has the same size as that of the object. Answer is true. Number 5. The opening in the eye where the light enters is known as the pupil. Answer is true. Question number C. Fill in the blanks using the words given in the box. Myopia, same, braille, lateral inversion, equal, vitamin A. Number 1. In a plane mirror, the size of the image is dash as the size of object and the distance of the object in front of the mirror is dash to the distance of the image behind the mirror. Answer is same, equal. Number 2. The left-right inversion in a plane mirror is known as dash. Answer is lateral inversion. Number 3. Dash is the defect of the eye which is also known as short-sightedness. Answer is myopia. Number 4. The preventive measure for eye care is nutritious diet rich in dash, vitamin A. Number 5. The dash system consists of raised dot in patterns that represents both alphabets and numerals and is used by visually challenged people to read and write. Answer is braille. Question number D. Give reasons for the following. Question number 1. The word ambulance in front of the ambulance is written literally inverted. जो word ambulance है, ambulance के ऊपर inverted में लिखा जाता है. क्यों? Answer is the word ambulance in front of an ambulance is written literally inverted. This is done so that the driver of the vehicle in front of the ambulance can easily read the word on his rear view mirror and give away
to the ambulance. वर्ड एम्बुलेंस लिटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है एम्बुलेंस के ऊपर, ताकि जो ड्राइवर है उसके आगे वाला व्हीकल उसके रियर व्यू देख सकता है मिरर में, और जब वो देखेगा आप मिरर में तब उसको सीधा दिखाई देगा एम्बुलेंस, और उसको फटाफट रास्ता दे देगा ताकि एम्बुलेंस चली जाए. क्वेश्चन नंबर 2. वी सी ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ पर्टिकुलर कलर. हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिसमें पर्टिकुलर कलर है. आंसर इज वी सी ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ पर्टिकुलर कलर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स ऑफ लाइट एक्सेप्ट दैट कलर. हम ऑब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर कलर में देखते हैं क्योंकि वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट वो वाला जो कलर जो ऑब्जेक्ट का होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को कलर में देख सकते हैं. नंबर 3. सम पीपल वियर ग्लासेस एंड स्पेक्टिकल्स. कुछ लोग ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, मीन्स चश्मा पहनते हैं. आंसर इज सम पीपल वेयर ग्लासेस टू करेक्ट द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई, मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस. कुछ लोग चश्मे पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं उनके जो कॉमन डिफेक्ट्स हैं आई के उसको करेक्ट करने के लिए. जैसे किसी को मायोपिया होता है, शॉर्ट साइटनेस होता है. मायोपिया यानी शॉर्ट साइटनेस, पास की चीज़ दिखाई नहीं देती है. हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, जिन्हें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो कुछ लोग चश्मे पहनते हैं ताकि उनका विजन अच्छा रहे. अ पेंसिल इन अ ग्लास ऑफ वाटर अपीयर्स ब्रोकन. पेंसिल ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे तो हमको ऐसे दिखाई देगी जैसे टूटी हुई है. क्यों? Answer is the pencil appears to be broken because of refraction, which is the phenomena in which light passes from one optical medium to another, deviates its path or changes its direction. It is found that when light passes from air into water, it bends towards the normal. पेंसिल हमको ऐसे दिखाई देती है जैसे टूटी हुई हो. जब हम ग्लास में पानी भरा हुआ उसमें डालते हैं तो क्यों? ये रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है. इस फिनोमेना में ये होता है कि लाइट जो है एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब वह अपना पाथ को चेंज करती है, डायरेक्शन को चेंज करती है. इसीलिए हमको एयर से वाटर में जाने की वजह से हमको बैंड किया हुआ है लाइट ने नॉर्मल की तरफ. इसी वजह से हमको ये टूटी हुई दिखाई देती है पानी के भरे हुए ग्लास में. इमेजेस फॉर्म ऑन द ब्लाइंड स्पॉट आर नॉट विजिबल. जो इमेजेस ब्लाइंड स्पॉट पे हमारी आंखों में बने हुए होते हैं वो हमको नहीं दिखते हैं. आंसर इमेजेस फॉर्म ऑन द ब्लाइंड स्पॉट आर नॉट विजिबल एज देयर आर नो रॉड्स टू डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड नो कोन्स टू डिटेक्ट द कलर. जो इमेजेस हमारे ब्लाइंड स्पॉट पे बने हुए होते हैं, आई के अंदर ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसके ऊपर इमेजेस बनते हैं पर हमको दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वहाँ पे रॉड सेल्स नहीं होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वहाँ पे कॉन सेल्स भी नहीं होते हैं जो कलर को डिटेक्ट करते हैं. इसीलिए जो ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बनती है हम उसे नहीं देख सकते. क्वेश्चन नंबर ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और अ सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 1. What is the type of reflection when light falls on an object such that we do not see our reflection clearly? Answer is diffuse. Number 2. When one stands in front of a plane mirror, there is a left-right inversion of the image formed. What is this phenomena known as? Answer is lateral inversion. Number 3. Name the phenomena behind the formation of a rainbow. Answer is dispersion. Number 4. Name the part of the eye which helps in focusing 70% of the light falling on the eye. Answer is cornea. Number 5. Name the system using which a visually challenged person can read and write. Answer is Braille. Question number F. Answer the following question in brief. Number 1. State the 2 laws of reflection. 2 laws reflection के बताइए. Answer. Number 1. First law of reflection. The incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. Second law of reflection. The angle of incidence is equal to angle of reflection. जो
फर्स्ट लॉ है उसमें ये बताया गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 20 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो वो भी 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लियर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच का अंतर बताइए। आंसर, क्लियर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। वेयर एज इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। क्लियर रिफ्लेक्शन पॉइंट 2, इट ऑकर्स फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। ये स्मूथ सरफेस से होती हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इट ऑकर्स फ्रॉम अ रफ सरफेस। ये रफ सरफेस से उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इन ह्यूमन आई। मानव आँख का क्या कार्य है। आंसर इज द foremost part of the eye through which light enters the eye is a transparent cover called the cornea. The cornea protects the eye and about 70% of the focusing of light falling on the eye is done by the cornea. जो foremost part होता है आई का जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है आँख में, वो ट्रांसपेरेंट कवर होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया प्रोटेक्ट करता है आई को और 70% जो फोकसिंग होती है आँख में, जो लाइट एंटर होती है वो कॉर्निया द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रॉड एंड कॉन्स, वेयर आर दे फाउंड। मानव में रॉड और कॉन सेल्स के क्या फंक्शन है और वो कहाँ पाए जाते हैं। आंसर इज द रेटिना हैज सेल्स कॉल्ड रॉड एंड कॉन्स, so named because of the shape of the cells. The rods detect the intensity of light, where the cones detect the color. There are many animals that have only rods and no cones in the retina. Therefore, they see the world in black and white. रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं जिसको रॉड सेल्स और कॉन सेल्स कहते हैं। ये इस तरह से इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनका शेप ऐसा होता है। रॉड सेल्स डिटेक्ट करते हैं इंटेंसिटी लाइट की और कॉन सेल्स डिटेक्ट करते हैं कलर। कुछ एनिमल्स में ओनली रॉड सेल्स ही होते हैं, कॉन सेल्स नहीं होते हैं रेटिना में। तब ये जो एनिमल्स हैं जिनमें केवल रॉड सेल्स होते हैं वो केवल ब्लैक एंड वाइट में ही दुनिया को देख सकते हैं। Question number 3, how can one take care of their eyes? List out a few points on eye care. आँखों की देखभाल कोई कैसे कर सकता है। आँखों की देखभाल पर कुछ बिंदुओं पर सूचीबद्ध करें। आंसर इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आइज। सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स आर, नंबर 1, taking proper diet which is rich in vitamins, especially vitamin A. Number 2, avoiding reading books or watching television in low light, exposing the eye to intense light sources such as lasers, bright halogen lights or direct sunlight. Number 4, visiting the doctor in case of eye injury or when foreign particles enter their eyes. Some of corrective measures are, number 1, wearing spectacles in case of defect in vision. Number 2, eating vitamin-rich nutritious diet. Number 3, visiting a doctor or ophthalmologist immediately in case of any eye problem. कुछ important points इस प्रकार से हैं इससे हमें देखभाल करनी चाहिए अपनी आँख की। नंबर 1, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए जिसमें विटामिन ज़्यादा हो, स्पेशली विटामिन ए। और बुक्स को और टेलीविज़न को बहुत कम लाइट में पढ़ना और देखना नहीं चाहिए। आँख को एकदम तेज़ रोशनी में एक्सपोज नहीं करना चाहिए, जैसे लेज़र्स की लाइट होती है, हेलोजन की लाइट होती है। डायरेक्ट सनलाइट में हमारी आँख को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आँख में या कोई फॉरेन पार्टिकल आँख में चला जाता है तो तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। और कुछ करेक्टिव मेजर्स इस प्रकार से हैं,
चश्मे पहनने चाहिए। जो भी आपको डिफेक्ट है, मायोपिया है, हाइड्रोमायोपिया है, तो उसमें आपको चश्मे पहनने चाहिए, जिससे आपका विजन अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा। नंबर 2, विटामिन रिच न्यूट्रियस फूड खाने चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए इमीडिएटली अगर कोई आँख की प्रॉब्लम होती है तो। क्वेश्चन नंबर आई, पिक्चर टॉक। लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई।